The future tense imagination concept. In this concept, we are going to cover two tenses basically. First is future indefinite tense, and the second one is future perfect tense. So, future indefinite versus future perfect. We already know the rules of these tenses, guys. The rules are pretty easy. For future indefinite tense, this is also called as simple future tense. The rule is subject plus modal. That means will, would, can, could, shall, should, anyone. So here we are taking will. Okay. So subject plus will plus first form of main verb plus object. So in short, you can fix the rule as will plus first form. What is the meaning of this kind of statement? The meaning is कुछ होगा, किसी time पर कुछ होगा. That's the meaning. Alright. Alright. On the other side, we have perfect tense. The rule is subject plus will have. So here will is our model. We may have will have, would have, may have, might have, should have, etc. So there could be variations of using different models. So will have plus third form. In perfect tense, we always use third form. Or you can just fix like this, that whenever you have any have form as a helping verb, you need to have third form of main verb after that. So in all the perfect sentences, we use third form. Here also we have third form. So subject plus will have plus third form plus object. This is the rule for perfect tense, guys. So what is the meaning of perfect tense? The meaning of perfect tense is कुछ हो चुका होगा या कुछ हो गया होगा किसी time तक. There is always a deadline in perfect tense. Whenever we have perfect tense, present perfect means अब तक, past perfect means past के किसी time के पहले तक, and future perfect means future के किसी time के पहले तक काम हो चुका होगा. That kind of meaning will come out. Okay. Now, first of all, we should fix the rules. So I want you to come onto the chat window quickly. Please come onto the chat window. Whatever is written right now in front of you, let's fix that, guys. So please come onto the chat window and write down these two rules. So you can write down indefinite or future indefinite as will plus first form. Only write down will plus first form for indefinite, and for perfect, write down will have plus third form. So please come out of the chat window, everybody. For indefinite, write down will plus first form. Let's fix the rules first of all. And the meaning is hoga. That's what you all have to write. Okay. For perfect, write down will have plus third form. Will have plus third form. The meaning is kuch ho chuka hoga. Right? So indefinite is will plus first form, perfect is will have plus third form. Write down the Hindi meanings in brackets, guys. Will plus first form means hoga, will have plus third form means ho chuka hoga. Right, everybody should do it. Let's fix the rules first of all. Will plus first form, write down in brackets hoga. You can write down in SMS language also, like this. Okay, hoga. And will have plus third form means ho chuka hoga. Will plus first form means hoga, will have plus third form means ho chuka hoga. Please write down the Hindi meanings also. You're going to use these Hindi meanings to imagine what kind of actions do they represent. So will plus first form, will have plus third form. I've got the responses from around 7 people so far. So please make it fast, guys. Everybody has to submit this. Let's fix the rules. Will plus first form, will have plus third form. Right. All of you have to do it. Will plus first form means hoga. Will have plus third form means ho chuka hoga. Please write down quickly. Everybody. All right. Now there is a way to remember these rules. If anybody faces any issue in fixing the rules, people sometimes have issues in fixing the perfect tense. So you can relate them with indefinite, means sorry, present tense also, not indefinite. You can relate them with present tense, and from there you can get this rule also, or all these rules of future tense and past. So let me tell you how. So if you add in the present tense, if you add a model, you will get the rules of future tense. If you add a model in the present tense or present rules, you will get a future tense. For example, the rule of present indefinite is first form S or ES. Let's say a sentence is will, I'm sorry, let's say the present sentence is I go. That means मैं जाता हूँ. What will be the future tense of that? Future indefinite is going to be I will. So what did we do? We just added a model over there. We created a possibility by adding a model over there, right? So when you have a present sentence, you add a model into that, you get a future sentence.
So I go becomes I will go. You can fix the rules like this. Okay. Similarly, let's take future perfect tense. Suppose the sentence is I have gone. That means मैं जा चुका हूँ. Now if you want to make it मैं जा चुका हूँगा, you just need to add possibility. So add will over there. Model को add करिए, possibility add there. देखिए बाकी सब same है. I will have gone. So how do we get this rule? Pretty easy. We have added will into the present perfect sentence. So I go becomes I will go. I have gone becomes I will have gone. Right? Let's just fix it as a general rule. फ्यूचर के रूल्स कैसे बने? प्रेजेंट में मॉडल लगाओ, फ्यूचर का रूल बन जाए. दैट्स हाउ यू कैन फिक्स इट. एंड विल के बाद कोई फर्स्ट फॉर्म एस और ई एस मीन्स सिंगुलैरिटी का इशू नहीं है, सो इसलिए एस और ई एस नहीं आया, ओनली फर्स्ट फॉर्म आया. सिमिलरली विल हैव गॉन, आप फ्यूचर परफेक्ट में देखेंगे विल के बाद में सिर्फ हैव है, हैज नहीं है, बिकॉज विल और सिंगुलैरिटी प्लुरैलिटी का कोई इशू नहीं आएगा. सो सब्जेक्ट के बाद है विल, इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप है. विल के बाद है हैव, तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा चाहे प्लूरल होगा, उसका इम्पैक्ट विल पे पड़ सकता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट हैव पे नहीं होगा, बीच में विल है. राइट. So guys, I'm sure everybody has fixed the rules because I've got the responses in the chat window. Okay, Madhuri is not able to see the slide. Is anybody else facing the same issue? Is anybody else facing this issue that you're not able to see the slide? Madhuri, if you're facing this issue, I would suggest you can leave the meeting and join it again. Not visible. Now visible. Okay. All right. And you please change your name also. Yes, this guy who has replied right now, not visible. Yes, I did. Okay. Please rename yourself. Your device name is visible right now. Sony is able to see. Means rest of the people must be able to see. Right? Okay. All right. So please take a click of this, guys. Please take a screenshot and then we'll move on. So we've at least fixed the rules. Okay. So future indefinite is will plus first form, and future perfect is will have plus third form. And it's not only about will, you can use other models also, like would plus first form, should plus first form, could plus first form, etc. So the rules are same, their meanings will be different. Okay. Similarly for perfect tense, will have plus third form, should have plus third form will show suggestions, could have plus third form will show capabilities or abilities, etc. Right? Now let's understand the logic of the difference in these two sentences in terms of reference or the timeline. Right? Now, one thing which we need to fix always is that whenever we use future indefinite tense, indefinite means forward direction. Means what? Indefinite means the time will go forward. For example, let's take this example of a timeline. You all will understand it clearly. Okay. Now, just fix this that suppose we are talking about a time that is, let's say over here I'm writing, if I say tomorrow, now what is tomorrow for today? It's indefinite. Okay. Now if I say tomorrow 5 p.m. or 5 p.m. tomorrow, now that's indefinite. Now if my story goes forward and I say then at 6 p.m., so 6 p.m. will be indefinite for 5 p.m. Then if my story goes forward and I say at 7 p.m., 7 p.m. will be indefinite for 6 p.m. Means what? If you go to any one point in future, that's indefinite point. If you move forward from that point, that's again indefinite point. Those who attended previous classes would be able to understand this terminology. For rest of the people, I'm explaining it again. आप किसी भी एक पॉइंट पे जाइए, फ्यूचर के किसी भी एक पॉइंट पे, वो अभी आपके लिए इनडेफिनेट है, मीन्स डेफिनेट नहीं है, मीन्स हुआ नहीं है. राइट. सो दैट्स इनडेफिनेट. सपोज कल 5 बजे क्या एक्शन होगा, दैट एक्शन विल बी इनडेफिनेट राइट नाउ. अभी तो वो इनडेफिनेट है, हम बता जरूर रहे हैं कि क्या होगा, वो पॉसिबिलिटी के वे में बताए हैं, बट दैट्स नॉट डेफिनेट. डेफिनेट मीन्स जो हो गया है, इनडेफिनेट मीन्स जो नहीं हो गया है. राइट. ना अगर हम 5 PM के बाद का कोई एक्शन सोचेंगे तो वो भी इंडेफिनेट मानेंगे. 5 PM तक स्टोरी पहुंच गई, उसके आगे हम पहुंचेंगे तो इंडेफिनेट. 5 PM के बाद 6 PM इंडेफिनेट, 6 PM के बाद 7 PM इंडेफिनेट एंड सो ऑन. So whenever the story goes forward in future tense, we keep on using future indefinite tense.
The same logic we applied for past tense also, guys, if you remember. So if you go to any one point, use indefinite tense. If you move forward from that point, keep on using indefinite tense, right? We'll take a story after this, and then we'll get a little bit more idea about it. Or in fact, we can right away take the story first. We can clear the indefinite tense, and then we can come back to the perfect. Let's look at the next slide. We'll come back to this slide later. Now, let's say this is a story. मैं कल 3 बजे तुम्हारे घर आऊंगा. तो हम 3 बजे पे गए. अभी प्रेजेंट से किसी एक पॉइंट पे पहुंचेंगे, right? Let's say this is what we're doing. So this is present. हम लोग यहाँ पे हैं अभी. और अब हम अपनी स्टोरी को किसी एक पॉइंट से शुरू करेंगे. सो जब भी आप किसी एक पॉइंट पे जाएंगे फ्यूचर के, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज इंडेफिनिट, राइट? सो वी नीड टू यूज विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ओवर दैट. तो आप स्टोरी शुरू कर सकते हैं विल प्लस फर्स्ट फॉर्म से. सो मैं कल 3 बजे तुम्हारे घर आऊंगा. द स्टोरी विल स्टार्ट लाइक दिस. आई विल कम टू योर हाउस एट 3 PM टुमारो, राइट? फिर हम एक फिल्म देखने चलेंगे. तो अब आपको चेक करना है स्टोरी कहाँ गई. अभी आप लोग इमेजिनेशन में 3 PM पे तो ऑलरेडी हैं, राइट? एंड अब जो स्टेटमेंट आया वो 3 PM के बाद का है. उसके बाद हम मूवी देखने चलेंगे. सो द मोमेंट यू गो फॉरवर्ड फ्रॉम एनी पॉइंट, यू आर बेसिकली मूविंग इन द इनडेफिनिट डायरेक्शन. टेंसेस में इनडेफिनिट का मतलब है टाइम का आगे बढ़ना. इंडेफिनिट का आप मीनिंग निकाल सकते हैं जो डेफिनेट ना हो. दैट मीन्स 3 PM के लिए 3 PM के बाद वाला एक्शन इनडेफिनिट माना जाएगा, क्योंकि वो 3 PM तक तो नहीं हुआ होगा, राइट? So for any particular reference, if you give an action in the forward direction, that action will be an indefinite action for that reference, उस point के लिए, right? Similarly, आप जितना story आगे बढ़ाते जाएंगे, आपका indefinite tense ही continue होता जाएगा. So we'll keep on using will plus first form until the story goes forward. So the statement over here is then we will go to watch a movie. Means अगर हम बार बार सोचेंगे आगे की बात, किसी भी पॉइंट के लिए आगे की बात, आगे की बात, उसके बाद क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, वो सारे सेंटेंसेस हमारे इंडेफिनिट टेंस से भरेंगे, क्योंकि फ्यूचर की स्टोरी है, इसलिए फ्यूचर इंडेफिनिट विल प्लस फर्स्ट फॉर्म आप लगा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन गिव योर टुमारोज activities, all the activities using future indefinite tense, you need to move in the forward direction. You can talk like this. I will get up at 6 AM. कल मैं 6 बजे उठूंगा. Then I will get ready. I will go to my office. I will conduct a meeting. Then we will work upon a particular project. Then I'll have my lunch in the afternoon. After that, I will call my friends. We will meet after the office. We'll go for a movie. We'll come back, and then I'll sleep. So what am I doing? I'm just taking my story forward, and I'm using will plus first form everywhere. Why? Because I'm in future and I'm going in indefinite direction. हम फ्यूचर पे खड़े हैं और indefinite डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, तो हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को लगाते जाएंगे, right? For those who are comfortable so far, please let me know in the chat window. You can take a clip of this, and we are going to discuss perfect after this. Once everybody is clear, we are going to discuss perfect. So those who are comfortable, please reply in the chat window, and we are going to do a little bit practice upon this. First of all, before moving to perfect, we'll do a small practice. Very good. Now I want all of you to tell me 3 or 4 activities that you are going to do after the class today. आप आज क्लास के बाद क्या करेंगे, वो 2 या 3 एक्टिविटीज आपको बतानी है. यूज विल प्लस फर्स्ट फॉर्म. विल प्लस फर्स्ट फॉर्म को यूज करिए और अपने सेंटेंसेस बनाइए. सो आफ्टर द क्लास आई विल हैव अ कप ऑफ टी. देन आई विल कॉल माय पेरेंट्स एंड आई विल टॉक टू देम. दैट्स इट. सो गिव एनी स्टोरी गाइस. व्हाट वुड यू डू आफ्टर द क्लास? दैट्स द क्वेश्चन. आप क्लास के बाद क्या करेंगे? You can use will plus first form, would plus first form, or any other module plus first form. Surety will change. Will plus first form means you're completely sure, 100% surety is there. Then would plus first form, may plus first form, might plus first form, you will use any one of them. But give me some statements. What will you do after the class? आप class के बाद क्या करेंगे? And just imagine that we are moving forward. Imagine करिए हम आगे चल रहे हैं story, right? So please give me a story, guys. We are fixing indefinite tense only right now. Future indefinite tense. Right, I've got some responses. Kavita has given some statements. I will revise the topic, that is future tense.
Then I will prepared breakfast. There is a mistake, Kavita. Will plus first form is the rule. Always use first form. I think that's a typing error. So I will prepare breakfast. Now, yes, that's correct now. Absolutely correct. Jyoti, I will prepare breakfast and will prepare material for my daughter's class. Right. Now, Jyoti has written, I will prepare breakfast and will prepare. Now, let's have a small learning over here, guys. I'll just first of all copy and paste this statement, then we all can discuss it. This is what she has submitted, guys. Now let's learn one thing from here. See, so the statement is I will prepare breakfast. ये ठीक है, मैं breakfast बनाऊंगी, correct है. And will prepare. अब ये जो हमने and लगाया है यहाँ पे, so and लगाने के बाद अगर subject same है आपका, आप I के लिए ही दोनों sentences बना रहे हैं, right? Then we do not need the helping verb once again. Since in this case, yes, I will prepare breakfast and prepare material for my daughter's class. The subject is same. यही ये वाला action and इस action को same candidate कर रहा है. That is why we don't need to have the subject once again. If the subject changes, suppose I will prepare breakfast and my husband will prepare. In that case, we need that. Okay, the spelling is not correct, but let's say that is just a typing error. So subject is same. We don't need the subject once again after add. For example, I will go and play with them. सब्जेक्ट सेम है, इसीलिए हमने सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब दोनों दोबारा से नहीं बोले. आई विल गो, मैं जाऊंगा और खेलूंगा. आप कितनी भी वर्ब्स ऐड कर दीजिए यहाँ पे, कॉमा लगा के लास्ट वाले के पहले एंड लगा दीजिएगा, राइट. सो रिपीट नहीं करिए. सब्जेक्ट चेंज होगा तो हेल्पिंग वर्ब के साथ आपको दोबारा से वो सब्जेक्ट बोलना पड़ेगा, राइट. आई विल गो एंड ही विल कम, ऐसे कहना पड़ेगा, राइट. वेरी स्मॉल लर्निंग. आई एम श्योर एवरीबडी वुड बी कंफर्टेबल. ऑलराइट, let's see some more submissions quickly. Next we have Ruksar. I will take my breakfast, then I will do some practice on algorithm. Fine. Next Ashish, I will take a cup of tea. After that, I would take a bath. Correct. After that, I would worship of God. There is no need to say of God. You can say I would worship. Then I will take breakfast. All right. And then I might go to the market to purchase some articles. Absolutely correct. So you can see that he has used different articles over here, right? He has used multiple. I'm sorry. He has used different models over here, and that's what you all are allowed to do. You can replace will with other models. The possibilities will change. We are going to take models topic in the next to next session, but right away you can find out. There is nothing tough in replacing will with other models, guys. This is the submission of Ashish. You can see the submission. I will take a cup of tea, correct. After that, I would take a bath. Very nice. What is the difference? क्या difference हुआ इसमें ऐसा करने से? कोई बहुत बड़ा difference नहीं है. I will means आप 100% श्योरिटी पे बात कर रहे हैं, and I would means आप 98% श्योरिटी पे बोल रहे हैं या फिर आप फॉर्मली बोल रहे हैं. So will shows 100% possibility or will is used for promise or commitment, right? And would is used for formal cases of 98% possibility. दोनों का ही मतलब है ऐसा होगा. So you are allowed to use them. आप इनको replace कर सकते हैं, कभी भी interchange करिए. आप यहाँ पे I would take a cup of tea बोलते फिर भी ठीक है. Similarly, I will take a bath, that is also correct. After that, I would worship. There is no need to say of God, right? Then I will take breakfast. Then you can also replace this again if you want. Either don't use anything. I might go. You can directly say that, or after doing that, I might go to the market to purchase some articles. Rest is absolutely right, right? Okay, you've done a good job, Ashish. Let's see the submissions of rest of the candidates. Okay, Ambika, I will go to the market and I will buy some book. If you say some, then write down some books. Otherwise, it means um, some particular book that you already know. That is also fine. Write down some books. All right. Okay. So I'm sure most of the people would have got the concept, and I can see that over here, how many people have given the submission? Let me just quickly check. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 people have given their submission. What rest of the people are doing right now? There are 23 people right now. I need submission from everybody. Those who are not submitting may leave this meeting. This is a practice for everybody. सबको sentences submit करने हैं. At least 3 sentences आप submit करिए. आप class के बाद क्या करेंगे?
I've got 10 responses right now. I will wait for 1 more minute and I'm going to remove people from the meeting. I can see the names who have submitted. They will stay in the meeting. Rest of the people will have to be out of the meeting. आप अगर क्लास अटेंड कर रहे हैं then you need to be completely involved. Then only you can remember and you can apply the rules afterwards. So rest of you, please give your submission. I'll just give the names of the candidates who have already given their submission. Kavita, Jyoti, Sonu, Madhuri, Vipul has given a submission. Rajneesh, Girish, Ruksar, Ashish Sharma, Ambika, and now Shivam has given us statement. Okay, Shivam sentences, I will prepare breakfast. After that, I will go to the office. Right, that is Santosh sentence. That's correct. Shivam, I will go outside with my brother and play cricket. Fine, absolutely correct. Good. Rest of you, I'm waiting. Good. Now see, हिंदुस्तान में थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाओ काम अच्छा होने लगता है. And believe me, this is an absolutely wrong approach. ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए. If you're getting up early in the morning to attend these sessions, then you must be passionate yourself. This is not just a video which is going on in front of you. It's a live class. Everybody is required to submit their answers. Otherwise, there is no sense of attending the class at early in the morning. Early in the morning, right? What you can do is you can watch the video afterwards. So, need to submit. Right. Now I've quickly got around 6-7 responses. Let me quickly check. Kamal, I will eat breakfast, then I will do my office work. Absolutely correct. Ajay Kumar, after the class, I will take my breakfast, then I will buy pen. You should write, I will buy a pen. And please have, guys, please observe the punctuations and capitalization of your words. Breakfast के बाद full stop होना चाहिए, then का T capital and I should always be capital. Next, Abhay, I will plan for office work, then I will call boss, means my boss, and then I will take breakfast. Fine. Next, we have Siddharth. I will wake up early, then I will finish my homework. Siddharth, are you sleeping right now? If you're giving this statement, what does that mean? Siddharth, फिर से सुनो. The question is, what will you do after the class? Class के बाद क्या करोगे? And if you say, I will wake up early, this means what? What should be the meaning that I should take out of that? कि मैं जल्दी उठूंगा क्लास के बाद. That means क्लास में सो रहे हैं. Siddharth, please submit your sentence again. Once again, we need to submit. Be logical. Okay. Next, we have got Hare Krishna, NP. So, is that your full name? Or you have written Hare Krishna just to take the name of the god? Alright, the sentences are, I will give milk to my brother, then I will take breakfast and I will study. Correct. Saransh, I will brush my teeth and then I will finish my homework. Correct. Pratik, I will go to office, then I'll take a team meeting and then I will finish my office work. At 1 p.m., there should be a comma after that. I will come back to my home for lunch. Rest is fine. All right. Now, almost everybody has given answers, and I'm happy that I've got submission from all the people now. Yes, Siddharth, I will take a bath. You should write down a bath, and then I will finish my homework. Now it's correct, Siddharth. All right. Okay, guys. Now I'm confident that everybody has got the point that how we need to use will plus first form. Will plus first form is used when the story goes forward. आप फ्यूचर के किसी भी पॉइंट के आगे जाएंगे तो will plus first form यूज होगा. ठीक है. Now let's get back and see how to use perfect tense. Now, first thing that we need to understand for perfect is perfect means complete. Perfect means, let's say, definite. Okay. So the definition of perfect will be valid when we know the deadline. जब तक हमें ये नहीं पता कि डेडलाइन क्या है, मतलब हमें कब तक वो काम हो चुका होगा, अगर ये नहीं पता तो परफेक्ट का डेफिनेशन ही कंप्लीट नहीं होता. परफेक्ट मीन्स आपको एंडिंग पता है. दैट्स व्हाट इज गोइंग टू बी परफेक्ट. परफेक्ट इन टर्म्स ऑफ टेंसेस मीन्स कंप्लीट. राइट. परफेक्ट का टेंसेस में मीनिंग आप समझिए कंप्लीट. कुछ कंप्लीट हो चुका है किसी डेडलाइन के लिए, किसी टाइम के पहले. सो हाउ डू वी शो डेडलाइन? वी शो डेडलाइन बाय सेइंग बिफोर or by. Before means pehle, by means tak. We also use till for that, etc. But there must be a deadline. So if you don't have a deadline, then आपका perfect tense नहीं बन पाएगा. Sometimes the deadline would be understood also. Discussion में होता है काफी बार. किसी ने कहा यार मैं 5 बजे तक रुका था, तू कहाँ था? सामने वाले ने कहा मैं तो चला गया था. अब उसने सिर्फ बोला मैं चला गया था. क्या इसमें डेडलाइन नहीं है? इसमें डेडलाइन है. डिस्कशन में आ गई पहले. इट मीन्स 5 बजे तक की ही बात है. वो चला गया था 5 बजे के पहले ही. Right? So deadline is required for perfect tense. So now we can take it as our indicator.
So the moment you say before or by in your future sentences, you need to use perfect tense. तो अगर फ्यूचर में हम डेडलाइन लगा देंगे, किसी टाइम के पहले की बात बोलेंगे, तो हम उसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगाएंगे। इंडेफिनिट में किसी टाइम के बाद की बात बोलेंगे तो इंडेफिनिट टेंस, किसी टाइम के पहले तो परफेक्ट टेंस। So we have already written before or by some time in future. We need to use perfect tense, right? Or this also implies that when the story moves back from any future point, we need to use perfect tense. Story moves back from any future point means आप imagination में किसी point पे हैं, suppose हमने कहा you will have slept before 9 p.m. आप 9 बजे के पहले सो चुके होंगे, तो इसको आप imagine कैसे करते हैं? आप पहले 9 p.m. पे पहुंच जाते हैं imagination, फिर आप उसके रेस्पेक्ट में सोचते हैं कि अच्छा उसके पहले ये काम हो चुका हो. That's all you imagine. Let's see some more examples, then we are going to have imagination on a timeline after that. They will have reached Mumbai by evening. So पहले आप evening पर जाएंगे imagination में और फिर आप उस पर imagine करेंगे okay उसके पहले तक वो मुंबई पहुंच चुके होंगे. They will have reached Mumbai by evening. Alright, so let's see some more examples, then we'll take it on the timeline. So this was the story that we started with. We used will plus first form in the first sentence. मैं कल 3 बजे तुम्हारे घर पहुंचूंगा, will plus first form. फिर हम एक मूवी देखने चलेंगे, will plus first form. अब अगर स्टोरी आगे बढ़ेगा तो will plus first form लगाइए, और अगर स्टोरी पीछे मुड़ गया इट मीन्स डेडलाइन हो गया. इमेजिनेशन में हम एक पॉइंट पे तो पहुंच ही रहे हैं, अब उस पॉइंट से पीछे मुड़ेंगे मीन्स वो पॉइंट एक डेडलाइन हो गया, वहाँ पे परफेक्ट टेंस लगाइए. सो वंस यू से आगे की बात यूज इंडेफिनिट, वंस यू से पीछे की बात यूज परफेक्ट टेंस. ये हमने बहुत ही ज़्यादा देसी अंदाज में लिख दिया यहाँ पे, इसको समझना बहुत आसान है. कोई भी स्टोरी जो आप फ्यूचर की बोलेंगे, या तो स्टोरी आगे जाएगी या तो स्टोरी पीछे मुड़ेगी, टाइम के हिसाब से सोचिए उसको. अब 3 बजे की बात है, 3 बजे पे इमेजिनेशन में चले जाइए. अब स्टोरी आगे बढ़ती जाए तो उस टाइम में आगे बढ़ते जाओ विल प्लस फर्स्ट फॉर्म लगा के, और जैसे ही स्टोरी पीछे मुड़े विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगा देना. राइट, लेट्स चेक गाइस. सो आई विल कम टू योर हाउस एट 3 p.m. टुमारो. मैं 3 बजे तुम्हारे घर आऊंगा. देन वी विल गो टू वॉच अ मूवी. फिर हम एक मूवी देखने जाएंगे. हम इंटरवल में बर्गर्स खाएंगे. अब सोचो मूवी आगे गई, सॉरी स्टोरी आगे गई या स्टोरी पीछे गई. सो भाई 3 बजे घर पे आऊंगा, उसके बाद मूवी देखने जाएंगे. सपोज 3:30 बजे मूवी देखने जाएंगे. फिर इंटरवल जो होगा वो तो उसके आगे ही होगा, पीछे तो होगा नहीं. तो फिर से विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, वी विल ईट बर्गर्स इन द इंटरवल. तो जब तक स्टोरी आगे बढ़ेगा आप इंडेफिनिट टेंस लगाते जाएंगे. बहुत अच्छे से फिक्स कर लीजिए. आप 3 p.m. पे गए इंडेफिनिट, उसके आगे गए इंडेफिनिट, उसके आगे गए इंडेफिनिट, स्टोरी पीछे मुड़ जाएगी, परफेक्ट टेंस लगा देंगे आप. राइट, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस. मैं 9 बजे घर पहुंचूंगा, तो स्टोरी फिर से आगे बढ़ गई. अभी इंटरवल आया था, इंटरवल के आगे की बात होगी 9 p.m. राइट, लेकिन तब तक, अब ये देखो इंडिकेटर भी अपने पास में, टिल देन. राइट, मेरे पापा आ चुके होंगे, ये भी एक इंडिकेटर है हिंदी में, चुके होंगे. राइट, बट आपको इमेजिन करना है डेडलाइन तब तक. तो स्टोरी पीछे नहीं, 9 p.m. के पहले तक की बात है. दैट इज विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म. So let's read the story once again guys, and we have got one more sentence, then we'll read the whole story after that. और उन्होंने डिनर कर लिया होगा, कब तक? 9 p.m. तक. So, जब आपको पता है कब तक, तो आपका परफेक्ट टेंस आने वाला है. In both of these cases we know before 9, before 9 p.m. ये दोनों ही परफेक्ट हैं. और इसके पहले जितने भी हैं वो सब आगे बढ़ी हैं आपकी स्टोरी से. आपने आफ्टर दैट सोचा है, स्टोरी आगे बढ़ाई है आपने. So let's read the whole story once again. I will come to your house at 3 p.m. tomorrow. मैं कल 3 बजे तुम्हारे घर आऊंगा. उसके बाद we will go means future indefinite क्योंकि आगे बढ़ गए. फिर उसके बाद इंटरवल होगा, that is again will plus first form. We will eat burgers in the interval. फिर आगे बढ़ गए, I will reach my home at 9 p.m. अब स्टोरी 9 p.m. से पीछे मुड़ी, तो आप इमेजिनेशन में कहाँ पे खड़े हैं? 9 p.m. पे. और नेक्स्ट दो स्टेटमेंट्स जो है वो 9 p.m. के बाद के नहीं है, 9 p.m. के भी नहीं है, 9 p.m. के पहले के. तो अब आपकी स्टोरी पीछे मुड़ी है इन दोनों स्टेटमेंट्स में. So till then, my father will have reached and he will have taken dinner. वो आ चुके होंगे और डिनर कर चुके होंगे. राइट, अब चाहे आप बोले कर चुके होंगे, या आप बोले कर लिया होगा, या हो गया होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ये सिर्फ हिंदी में टर्म्स हैं फ्यूचर को शो करने के लिए. मीन्स चुका वर्ड जो है वो जरूरी नहीं है आपको हमेशा दिखाई दे. आप काफी बार चुका वर्ड बोलते ही नहीं है. आप ऐसे बोलते हैं उन्होंने डिनर कर लिया होगा, कर चुके होंगे बोला ही नहीं, देखे यहाँ पर कर लिया होगा.
But what you need to focus upon is you need to focus upon whether the story is going back or it's going in forward direction. आपको देखना है डेडलाइन आया क्या. अगर डेडलाइन आ गया तो परफेक्ट टेंस है. Right? Now those who have got the concept, please reply with got it. We are going to imagine this once again on the timeline. I'm sure most of you would have got the point. Right. Okay. Now you all submitted some statements short while back. So what you need to do is you need to give the same statements and you need to add one or two more statements using perfect tense over there. Okay, before moving on to that, let's see this timeline guys quickly. So this is present. Present से अगर हम किसी भी फ्यूचर के पॉइंट पे जाएं तो हम will प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे. ठीक है, लेट्स फिक्स इट. किसी भी एक पॉइंट पे जाएंगे तो will प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे. इफ द स्टोरी गोज फॉरवर्ड आफ्टर दैट, आप आगे बढ़ेंगे, अगर आपने देन बोला, आफ्टर दैट बोला, एक्सेट्रा, then we'll use will plus first form once again. Forward means indefinite direction, right? Again, if you move forward, use will plus first form, and it's not only will, it's any module plus first form. Will, would, can, could, shall, should, may, might plus first form. कोई भी एक लगा दीजिए, first form लगाइए. Again, your story goes forward, use will plus first form. And if your story moves back from any point, किसी भी point से आपने पीछे मुड़ करके कुछ बोला, तो वो कैसे बोलते हैं? आप कहते हैं till then, before that, by then, ऐसे ही कुछ बोला जाता है, राइट? वहां पे लगेगा will have plus third form, और फिर से स्टोरी आगे बढ़ गई तो फिर से will plus first. तो कॉन्सेप्ट बहुत इजी है. आगे की बात will plus first form, पीछे की बात will have plus third form. पीछे मतलब कहाँ से? उस पॉइंट से जहां तक आप स्टोरी में पहुंच गए. रेफरेंस के आगे इंडेफिनिट, रेफरेंस के पीछे परफेक्ट. रेफरेंस मीन्स कहाँ की बात है, आप कहाँ तक पहुंच गए स्टोरी में. So when you move forward from the reference, you indefinite. You look back from the reference, it's perfect, right? Okay, now let's come out of the chat window and give me your submissions. You need to give me the similar story that what will you do after the class, आप क्लास के बाद क्या करेंगे, बट उस स्टोरी में आपको कहीं पर till then या before that लगा के will have plus third form भी add करना है. I will give you an example. Suppose if I say after the class I will take a cup of tea, right? Then I will call my parents, let's say at 10 a.m. अब कहाँ पहुंच गए स्टोरी में? आप 10 a.m. तक पहुंच गए. अब यहाँ पे आप बिफोर दैट या टिल देन कह दीजिए, राइट? बट बिफोर दैट, द मोमेंट आई से बिफोर दैट, इट मीन्स अब मैं पीछे मुड़ गया. किसके पीछे? 10 a.m. के पीछे. अब स्टोरी परफेक्ट टेंस को शो कर रही है. 10 a.m. के पहले क्या परफेक्ट होगा, क्या हो चुका होगा, वो बता रहे हैं. बट बिफोर दैट आई विल हैव टॉक्ड with my brother, राइट? स्टोरी क्या है? मैं क्लास के बाद एक कप चाय पीऊंगा, फिर अपने पेरेंट्स को कॉल करूंगा 10 a.m. पे. लेकिन 10 a.m. के पहले, बिफोर दैट मीन्स 10 a.m. के पहले मैं अपने भाई से बात कर चुका हूँ. अब भाई से बात कर चुका हूँ, भाई से बात कर ली होगी, भाई से मेरी बात हो गई होगी. हिंदी में आप इन मल्टीपल टर्म्स को यूज कर सकते हैं. आपका फोकस होना चाहिए बिफोर दैट पे. बिफोर दैट बोलते ही आपको दिखना चाहिए परफेक्ट टेंस आ गया. Now give me your submissions like that, right? You all gave some statements just to show the use of will plus first form. You can use the same story or a different story, and at any point you write down before that or till then and use will have plus third form. किसी भी point पे before that या till then लगाइए and perfect tense लगाइए. Give me your submissions, guys. And presently we have 21 candidates, so I need 21 submissions. Alright, so Madhuri has submitted, Shivam has also given an answer. Let me take your submission on the screen, guys.
me take the submission here. Okay, everybody will be able to see. Think about it, write a good story, guys. All right, so this is what Madhuri has written. Let's go through it and find out the mistakes. Let's do active reading, guys. I told you in the previous sessions also, we should be very alert, very active when we read something, because we can learn a lot of rules by just reading carefully. So after the class, there must be comma over there. Okay. After the class, I would ready. There is a mistake over here. This is for all of you. Now please stop submitting. Many people have submitted. Rest of you, please just take a break. Look at the window, look at the screen, and understand what are the common errors. Right? I would ready. इसको ध्यान से देखिए. हमारा रूल है would plus first form means will या फिर would कुछ भी एक बोलना है आपको, और उसके साथ बोलना है main verb का first form. First form. Right? Ready is not a main verb. Ready is an adjective. अभी कोई प्लीज सबमिट ना करे, इसको ध्यान से देखें. रेडी इज एन एडजेक्टिव. रेडी बिल्कुल ऐसा है जैसे आप बोलते हैं गुड और बैड. गुड इज एन एडजेक्टिव मीन्स आप कैसे हैं, अच्छे हैं. आप कैसे हैं, रेडी हैं. तो जब भी हम एडजेक्टिव्स के सेंटेंस बनाएंगे, उसके साथ में मेन वर्ब यूज करनी है, तो वो बी की फॉर्म या फिर गेट की फॉर्म्स यूज करनी है. बी का मतलब होना, गेट का मतलब हो जाना. वी डिस्कस दिस इन ट्यूसडे सेशन ऑल्सो. Be means hona and get means ho jana. Some people are still submitting. Please take a break. Please do not submit. Look at the window only. Please understand this concept. इस एरर को पहचानिए. I would ready. Mistake है यहाँ पे. Would के बाद में फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए. I would go, I would come, I would play, I would be. Be means होना. So I would be. कैसे होंगे आप? I would be ready. अब ठीक हो जाएगा सेंटेंस. So I would be ready. Then only the sentence will be correct. So will or would plus first form. This is the rule. If you use any adjective after that, you need a main verb before adjectives. And the main verbs for adjectives could be be or get. Be means hona, that means equal to, and get means ho jana. That shows action. That shows become wala meaning. वैसे पहले नहीं थे लेकिन हो गए. So after the class, I would be ready means मैं ready होंगी. I would get ready means मैं ready हो जाऊंगी. अब आप सोचिए कौन सा आपके इस केस में बेटर है. I would get ready या फिर I would be ready, right? So I would suggest go ahead with I would get ready. मतलब मैं क्लास के लिए ready हो जाऊंगी. That would be our step. Till then, now see, there is a full stop and full stop के बाद में small letter. इन मिस्टेक्स पे ध्यान देना पड़ेगा, अदरवाइज प्रोफेशनल राइटिंग में मार्क्स कटेंगे आपके. आप ईमेल्स भी ऐसे ही लिख देंगे फिर आगे चल. तो इट शुड बी कैपिटल टी. टिल देन, आंटी नहीं बोलते हैं, माय आंट बोलेंगे, राइट? टिल देन माय आंट will have prepared my breakfast. The sentence is absolutely correct. Because you're saying till then, आपकी स्टोरी पीछे मुड़ी, will have plus third form आना चाहिए. The statement is absolutely correct. Punctuation का error है, full stop के बाद में space होना चाहिए and T should be capital. Right? Then I would go to office. Okay, I would go to either say my office और से the office, because office particular है, या तो आप my बोल के उसको particular कर दीजिए या the लगाइए वहाँ पे. I would go to my office by auto. Before that, मैनेजर. अब ये कौन सा मैनेजर है, किसका मैनेजर है, ये कैसे पता चले? ठीक है, आप बोल सकते हैं माय मैनेजर या फिर द मैनेजर. माय मैनेजर वुड हैव कम टू ऑफिस. वुड हैव कम टू द ऑफिस. ऑफिस वही है. स्टेटमेंट बहुत अच्छा है. मैनेजर आ चुके होंगे, लेकिन किसके पहले आ चुके होंगे? आई वुड गो टू ऑफिस बाय ऑटो. आप ऑफिस ऑटो से जाएंगे, उसके पहले मैनेजर आ चुके होंगे. तो इसमें रीचिंग का सेंस अभी तक नहीं क्लियर हुआ था. तो आप एक स्टेटमेंट और डालिए. आई वुड टेक एन ऑटो फॉर माई ऑफिस. मैं ऑटो लूंगी ऑफिस के लिए. आई विल रीच माई और आई वुड रीच माई ऑफिस बाई 9 और एट 9. ठीक है, आई विल रीच माई ऑफिस एट 9 AM. टिल देन और बिफोर दैट फिर बोलिए मैनेजर वुड हैव रीच्ड. मैनेजर आ चुके होंगे. आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट माई वर्क. रेस्ट इज फाइन. So you've done a very good job, because one thing is very clear over here, that you have got the point. The moment your story moved forward, you used indefinite. For looking back, you used perfect. तो आपने लॉजिक बिल्कुल ठीक लगाया. बाकी जो एरर्स हैं
वो सिर्फ पंक्चुएशंस की हैं या फिर यहाँ पे बी और गेट कह रहे थे, उसको ठीक कर दीजिए. आई एम श्योर एवरीबडी एल्स वुड हैव आल्सो लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सबमिशन. लेट्स सी somebody else's submission now. All right. So Kavita has given this story. Let's take this story now. All right. So this is Kavita's submission. I will go to my school at 1 p.m. today. Fine. मैं 1 बजे स्कूल जाऊंगी. She's a teacher actually. Right. Till then, I don't know whether there is a space in between or not. Yes, there is no space. So Kavita, there must be a space after the full stop. But this, in fact, this seems to be a habitual error because देखिए आगे भी नहीं है आपका. There के बाद भी full stop आया, space नहीं है. यहाँ पे भी नहीं है. देखिए होम के बाद फुल स्टॉप, फिर टिल आ गया सीधे. सो आप स्पेसेस पे ध्यान नहीं देते हैं, आपको ध्यान देना है. कहीं पे एक्स्ट्रा स्पेस है, कहीं पे स्पेस नहीं है. तो एक्स्ट्रा का तो चलिए ठीक है, छोड़ देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई बिलीव वो टाइपिंग में एरर है. बट ये फुल स्टॉप के बाद हैबिचुअल मिस्टेक है, इसको ठीक करिए. आई विल गो टू माई ऑफिस एट 1 p.m. टुडे. टिल देन माई HOS will have arrived. So that might be head of the school, right? HF is head of the school. Will have arrived there. Absolutely correct. The sentence is absolutely correct. आपने एक पॉइंट पे पहुंचाया और जैसे ही टिल देन बोला परफेक्ट टेंस लगा, या विल हैव अराइव्ड. नाउ अ स्मॉल चेंज ओवर देयर. सपोज आपको श्योरिटी है, पक्का आ गए होंगे, तब तो हम विल बोलेंगे. इफ द श्योरिटी इज लेस देन वी कैन चेंज द मॉडल. हम यहाँ पे विल की जगह बोल सकते हैं वुड. थोड़ा सा श्योरिटी चेंज हुआ, हमें और श्योरिटी कम करना है, हम बोलेंगे मे. We want to reduce more surety, we are going to say might. Okay. Rest of the statement will remain same ways. So the HOS will have arrived, would have arrived, may have arrived. All the statements are absolutely correct. The surety is changing. Right? The surety is changing. All right. Next. Let me just put a space also. I will complete my work and will get it checked. Very nice. So suppose 1 p.m. की बात है, आप स्कूल जाएंगी, तब तक आपके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वहां पे पहुंच चुकी होंगी. राइट. आप अपना काम कंप्लीट करेंगी, मतलब उसके बाद कंप्लीट करेंगी, एंड यू विल गेट इट चेक्ड. वेरी नाइस. इट्स अ वेरी गुड स्टेटमेंट. यू विल गेट इट चेक्ड. इसको हम अभी फिक्स नहीं कर रहे, पैसिव वॉइस में सीख लेंगे. इसको अलग से याद कर लीजिए. गेट प्लस थर्ड फॉर्म मीन्स किसी से कोई काम करवाना. गेट समथिंग डन बाय समबडी. राइट. इसको एज अ शॉर्टकट सब लोग याद कर सकते हैं. किसी से कुछ काम करवाने को बोलेंगे गेट समथिंग डन बाय समबडी. गेट समथिंग डन. डन मीन्स थर्ड फॉर्म से आप वर्ब लगा सकते हैं यहाँ पे. गेट समथिंग डन बाय समबडी. This statement is a combination of active and passive voice. We will discuss that in the passive voice class. Okay, get something done by somebody. So you can just fix this for the time being, and you can use it to make sentences. So she has made a very good sentence. Then I will get, okay, and we'll get it checked by her. Correct. After that, let's have a comma here. I will come back home. Very nice. With home, we don't need punctuation. Very nice. So let's learn it from here, guys. देखिए एक्टिव रीडिंग से ही हम सीख रहे हैं. होम के पहले टू लगाना है कि नहीं लगाना. नहीं लगाना, फिक्स हो गया. राइट. टिल देन माय हस्बैंड, let's have a comma. Till then my husband will have left for his office. Absolutely correct. तब तक मेरे हस्बैंड ऑफिस के लिए चले गए होंगे या जा चुके होंगे. राइट. अब देखिए यहाँ पे विल हैव को मैं चेंज करता हूँ. विल हैव का मतलब है पक्का पक्का चले गए होंगे. और अगर मुझे एक्सपेक्टेशन दिखानी है कि चले ही गए होंगे, तो मैं उसको मस्ट कह दूँ. मस्ट हैव लेफ्ट. दैट मीन्स हो ही गया होगा ऐसा काम. दैट शोज एक्सपेक्टेशन. So will shows surety, quite high level of surety, and must shows expectation. Must is also used to show pressure. It is also used to show lawful conditions. आपको कुछ करना चाहिए, ये वाला मीनिंग भी आता है. एंड कुछ हो गया होगा, मतलब हो ही गया होगा, एक्सपेक्टेशन वाला मीनिंग भी आता है. राइट. एंड यू कैन यूज अदर मॉडल्स आल्सो. मे हैव लेफ्ट, माइट हैव लेफ्ट, would have left. Rest are also correct. But ये बहुत ही अच्छा यूज है. आप जब will की जगह must लगा देते हैं, it means हो ही गया होगा, ऐसा मीनिंग आता है. So अगर मैं बोलूंगा आपको you will have got the point,
you will have got the point. It means मैं काफी हद तक श्योर हो रहा हूँ, 100% श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ कि आपको तो बात समझ में आ ही गई होगी। अब मैं ये कैसे कह सकता हूँ, मैं इतना बड़ा कमिटमेंट कैसे दे सकता हूँ कि भाई आपको पक्का पक्का समझ में आ गई होगी? I can only say that if I check your assignments and I see that you are getting 100% marks, then I can say you will have got the point. Or you must have got the point will be a better statement in this. So you must have got the point. अगर मैंने सिर्फ इतना सा change किया इसमें, you must have got the point. That shows that I'm expecting this. इसका मीनिंग है आपको आ ही गया होगा समझ। तो इसको एक क्विक रूल की तरह फिक्स कर लीजिए, काफ़ी बार यूज हो जाता है, मस्ट हैव करके हम बोल देते हैं। तो जब आप गैस कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशन शो कर रहे हैं, मस्ट को लगा दीजिए विल की जगह, यू विल गेट अ वेरी गुड स्टेटमेंट, राइट? आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव गॉट द पॉइंट। देखिए मैंने क्या बोला। सो लेट्स हैव एक्टिव लिसनिंग। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव गॉट द पॉइंट। इंस्टेड ऑफ सेइंग विल हैव गॉट, आई एम सेइंग मस्ट हैव गॉट। दैट मीन्स आ ही गया होगा आप सबको समझ, राइट? Let's go to somebody else's submission. You have done a great job, Kavita. You can give a thumbs up to your guys. There is an option to give a thumbs up in the chat window. Let's take one or two more submissions. And always do a very active reading, very active listening. Always do that. You will learn a lot of rules through that. Your vocabulary would improve. Your thoughts would be very good afterwards. Your thoughts would improve right after that. So let's take the submission by Girish. This is what Girish has submitted. I will go to the temple after the class. Very nice. There's a particular temple, that's why we are using the over there, correct? Right? I will go to the temple after the class. I will have my breakfast at 10 a.m., correct? I will have read the newspaper before the breakfast. Absolutely correct. Your story is correct. Okay. Now, connectors gave a very good flow to the story. अगर हम स्टोरी में कनेक्टर्स लगाएं बहुत अच्छा फ्लो मेंटेन हो जाएगा, राइट? सो आई विल गो टू द टेम्पल आफ्टर द क्लास, राइट? Or you may say after the class I will go to the temple, both are fine. I will have my breakfast at 10 a.m. अब आप इसमें क्या करिए, टाइम को देखिए, पहले बोलिए, आपकी कनेक्टिविटी बेटर हो जाएगी, प्लस सामने वाले की अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी। आई विल गो टू द टेम्पल आफ्टर द क्लास एट 10 a.m. comma I will have my breakfast. आफ्टर टेकिंग द ब्रेकफास्ट और बिफोर टेकिंग द ब्रेकफास्ट, ये पहले बोल दीजिए, सामने वाले को रेफरेंस पहले मिलेगा तो उसको समझने में ईजी हो जाएगा, ठीक है? टाइम आप चाहे स्टार्टिंग में लिखिए चाहे एंडिंग में लिखिए, करेक्ट होता है, बट स्टोरी जब बता रहे हैं तो उसमें रेफरेंस पहले दीजिए ताकि वो इमेजिन करने के लिए कंफर्टेबल हो जाए। मतलब कहाँ की बात है ये बात आप जब पहले बताएंगे तो लिसनर आपका इजीली कॉम्प्रिहेंड करेगा आपकी बात को। सो बिफोर द ब्रेकफास्ट आई विल हैव रेड द न्यूज़पेपर। The story is correct. The story is already correct. I'm just giving you another way of giving the same information. So guys, please have a thumbs up for him. He has done a good job, right? Let's check who else has submitted. All right. Okay. So many of you have submitted. In fact, this time I believe almost all of you have submitted. Let's take somebody else's statements, guys. We have Pratik. Pratik, I'm taking your story. I might not be able to take all the submissions, but whichever submissions I'm taking right now, I'm sure rest of the people would be able to get a very good idea out of that. All right. So this is the submission by Pratik. Guys, this would be the last submission. Okay. I'm sure most of you would have got the point. If anybody has still got any confusion, you can go through the recording once again, or you can send your issues on the chat window or on WhatsApp. I'll take your issues afterwards. Okay, let's go through it. I will go to the office, right? In office jumper. Till then, let's have a comma over there. Okay. Till then, my team will have reached the office. My team will have reached the office. Okay. Or my team will have reached there. There is no need to say the office. My team will have reached there. Now there is a space and then a full stop. This is a mistake, and we can see it happening at two places. यहाँ पे भी हुआ. So be careful, Pratik. Space हमें बाद में चाहिए. I will complete my office work at 1 p.m. फिर से comma लगाइए. I will go back to my home. Okay. I will go back
होम, देखिए अभी एक स्टोरी में हमने पीछे सीखा था, कविता की स्टोरी थी कि होम के लिए हमें टू नहीं लगाना पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे उसको अप्लाई कर देते हैं। आई गो बैक होम फॉर लंच, I'll complete my office work. There could be a full stop because I don't see a requirement of having a comma. आप जो आगे की बात कह रहे हैं वो अपने आप में एक नया स्टेटमेंट है। At 1 PM आपने रेफरेंस दिया, कॉमा लगा दीजिए। I'll go back home for lunch, right? आप बैक चाहें तो हटा भी दीजिए यहाँ से, एडिशनल वर्ड दिख रहा है। I'll go home for lunch. I'll reach office again at 2 PM. Now you can say I'll come back to office, right? At 2 o'clock. Till then, till then, there is a comma required after that. My friends would have had lunch. Absolutely correct. Would have had means would have taken. Your statement is absolutely correct. In this statement, your first have is the helping verb. This had is the main verb. That means taken. Will have taken lunch. Absolutely correct. So the concept is absolutely correct. I'm happy that all of you are able to get the concept. When your story is going forward, you're applying indefinite tense. The moment you're looking back, the moment there is a deadline, you're applying perfect tense. So all of you are doing a great job, guys. I've got so many other submissions. I don't have much time to go through all the submissions, but you guys can take a click of all the rest of the submissions. They will work as examples for you. You can go through those examples afterwards to understand the concept. You can ask your queries personally also. You can send me a WhatsApp message, guys. This is the topic for today, that is future imagination. We have discussed indefinite and perfect tense. The rule is will plus first form. Will, would, can, could, shall, should, may, might. You can use any one model plus first form. Perfect tenses will have plus third form. Again, will have, would have, might have, could have, should have plus third form. That's the rule, right? We have seen that indefinite means किसी एक point की बात या फिर किसी point के आगे की बात. Perfect means किसी point के पहले की बात. There must be a deadline, right? We've also used them in stories, and I'm happy that almost everybody gave the correct usage. There were some minor errors, but the errors mostly were with the punctuations or with not having understanding of the particular verb. Rest everything was correct, right? So please let me know your comments upon this. In case you need something else from these sessions, then let me know. I'll add those things. In the next class, we are going to have the topic models, in which we are going to have, in fact, before models, we are going to have making stories of past, in which we are going to revise the concepts that we have done so far for past tense and future tense. We'll make stories for past. So we are going to use second form, act plus third form, and then today's concepts. Right? And then we'll have a session on models. So next session, that is making stories and models. These both of these sessions will basically give you a great hold on the same topic, that is future tense, because models मतलब फिर से हम बिल्कुल शेल शूट को डिस्कस करेंगे और उनका यूजेज आएगा, स्टोरीज बनाएंगे उस पर, तो सिमिलर कॉन्सेप्ट्स आएंगे एप्लीकेशन पे. एंड पास्ट टेंस हम ऑलरेडी देख के आए थे, जिसका मिस हो गया दैट विल बी रिवाइज्ड, because the moment we use them in stories, we use the rules in stories, we are going to discuss them again. So please do not miss the next session, guys, and ask me your questions on WhatsApp. That's for today's session. We are ending the session on time right now, and please be very punctual. Join the session tomorrow exactly at 7:30 a.m. I hope you must have got the point and you must have enjoyed the session. So please leave your comments, and your suggestions will definitely help me to improve the session. That's it, guys. Please enjoy the rest of the day. We'll meet tomorrow at 7:30 a.m.